हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री और इसका 10th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन क्या होता है? कार्बन इज ए नॉन मेटल हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर इज 12। ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड इन ग्रुप 4 ए और ग्रुप 14 इन पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, एलोट्रॉपी क्या होता है? द सब्सटेंस विच हैव अ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एट एलोट्रॉपी। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं तो उनको एलोट्रॉप्स कहते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होता है? एलोट्रॉपीज़ ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट। एलोट्रॉपीज़ ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं? डायमंड, ग्राफाइट, चारकोल। ठीक है, डायमंड क्या होता है? इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्ध फॉर्म ऑफ कार्बन है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3.52। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, इट इज़ वेरी हाई refractive index 2.415. It is chemically inert and on heating above 1500 degrees Celsius transferred into graphite. It formed tetrahedral crystals and hybridization of carbon atom is sp3. It has high melting and density. Black diamonds called as carbonado contains traces of graphite. तो graphite क्या होता है? plumbago और black lead. It is soft, greasy, dark greenish color crystalline solid. It is good conductor of heat and electricity. Its specific gravity is 2.3. ठीक है, hybridization of carbon in graphite is sp2 and it has a hexagonal layer structure. It is chemically more reactive than diamond. Its layer structure is held by weak van der Waals forces. Graphite is used in making for lining and making electrodes of electric furnaces, in making refractory crucibles, in making lead pencils, as a moderator in nuclear reactor, as a lubricant in machinery, as a reducing agent in steel manufacturing. ठीक है, forms of amorphous carbon obtained by destructive distillation. ठीक है, जैसे कि वुड चारकोल जो होता है वो क्या ऑब्टेन फ्रॉम वुड। सुगर चारकोल जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम केन सुगर। बोन और एनिमल चारकोल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल बोन्स। कोक चारकोल ऑब्टेन फ्रॉम कोयल। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon is known as organic chemistry. ठीक है, first organic compound prepared in laboratory was urea NH4CONH2. The natural source of hydrocarbon is petroleum. Hydrocarbons are classified as saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons. ठीक है, saturated hydrocarbons क्या होता है? The hydrocarbons in which carbon atoms are singly bonded are called saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are also called alkanes or paraffins. Alkanes are relatively unreactive under ordinary laboratory conditions. So alkanes are क्या दिया हुआ है? So alkanes are also called paraffins because paraffins means little reactive. जनरल फार्मूला ऑफ alkane क्या होता है? CnH2n+2. मीथेन का क्या होता है? CH4. ठीक है, अल्केन में मीथेन आ जाएगा। इथेन का C2 यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, 4 + 2 6, C2H6. ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर आइदर डबली और ट्रिपली bonded are called unsaturated hydrocarbons. Doubly bonded carbon atoms hydrocarbons are called alkenes. The general formula of alkene is CnH2n. यानी कि इथीन, प्रोपीन, ये सब आ गया। इथीन इज यूज्ड फॉर natural ripening of fruits. Triply bonded carbon atoms containing hydrocarbons are called alkenes. The general formula of alkenes are CnH2n-2. Example: ethene, acetylene. The molecular formula of ethene is C2H2 and its structural formula is this.
H pair single bond C, triple bond C, or H big bond. Acetylene is used for artificial ripening of fruit. Aromatic hydrocarbons, these are homocyclic compounds which contain at least one benzene ring in which carbon atoms are linked to one another by alternate single and double bonds. In Greek, aroma stands for sweet smell. Compounds in this classification have pleasant smell, hence they are called aromatic compounds. Benzene, naphthalene, anthracene, and anthracene. Isomerism, two or more compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers, and this phenomena is called isomerism. Petroleum क्या होता है? The term petroleum, Latin petra, goes to rock. Oleum oil is applied to the dark colored oily liquid with offensive odor, found at various depths in many regions below the surface of the earth. It is also called rock oil, mineral oil, or crude oil. A complete list of petroleum products, approximate composition, boiling range and their use in the given ahead. ठीक है, ये हुआ कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है इसका. जैसे कि अनकंडेंस्ड गैस जो होता है उसका फ्रैक्शन, बॉइलिंग रेंज कितना होता है, रूम टेम्परेचर पे अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन C1 C4, यूज़ कहाँ होता है, फ्यूल गैस में यूज़ होता है. पेट्रोलियम ईथर का सॉल्वेंट में यूज़ होता है. मोटर फ्यूल, ड्राई क्लीनिंग पेट्रोलियम, ये सारा ये देख लेना एक बार आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक है. ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, polymerization. The simple molecules which combine to form a macromolecule is called polymer. The process by which the simple molecules are converted polymer is called polymerization. NCH2 double bond CH2, polymerization CH2 and polyethylene. Natural occurring polymers are protein, nucleic acid, cellulose, starch, etc. Plastic are cross-linked polymers and are very tough. Lac is a natural plastic. Chemically, plastic can be of two types: thermoplastic, thermosetting plastics. Thermoplastics, these are the polymers which can be easily softened repeatedly when heated and hardened when cooled with little change in their example, polyethylene, polystyrene, polyvinyl chloride, Teflon, etc. Thermosetting plastic, these are the polymers which undergo permanent change on heating. On heating, they undergo extensive cross-linking in molds and become hard and infusible. Therefore, they are not be reused. Example, bakelite, glyptal, terylene, etc. Bakelite क्या होता है? Phenolformidite resins. It is a condensation polymer and is obtained from phenol and formaldehyde in presence of either an acid or a base catalyst. It is used for making combs, fountain pens, photographs, records, electrical goods, etc. Rubber क्या होता है? It is a polymer which is capable of returning to its original length, shape or size after being stretched or deformed. The rubber obtained from natural sources are called natural rubber, and polymer prepared in laboratory which are similar to natural rubber are known as synthesized rubber. ठीक है, नेचुरल रबर क्या होता है? सुप्रीम. पॉलीमराइज करेंगे तो ये बनेगा. ठीक है, सिंथेटिक रबर क्या होता है? नियोप्रीन. क्लोरोप्रीन से पॉलीमराइज करेंगे तो नियोप्रीन बनेगा. ट्यूकोल is made of a polymerization of ethylene chloride and sodium polysulfide. ठीक है, इसको पॉलीमराइज करेंगे तो थिकोल रबर रिपीटिंग यूनिट ये होगा. ठीक है, thiokol is chemically resistant polymer. It is used in the manufacture of hoses and tank linings, engine gaskets and rocket fuel. Vulcanization of rubber. Natural rubber is soft and sticky, and therefore in order to give strength and elasticity, natural rubber is vulcanized. Vulcanization is a process of treating the natural rubber with sulfur or some compound of sulfur SF6 under heat. Vulcanized rubber is used for manufacturing rubber bands, gloves, car tires, etc.
fibers are the polymers which have quite strong intermolecular forces, such as hydrogen bonding. Nylon 66, Dacron, Arlon, Orlon, etc. are the examples of this type. Rayon, synthetic fiber obtained from cellulose, is known as rayon. Teflon is common name of polytera teflon, polytera fluoroethylene. ठीक है. Gasol is a combination of gasoline and ethylene, ethyl alcohol. ठीक है. इतना हो गया. नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? फ्यूल्स. टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.